आइए आज हम ईमान की बुनियाद पाहे 6 कलमे सीखते हैं आसान अंदाज में। Kalima 1. Kalima Tayyib. Purity. This kalima is the declaration of the pure oneness of Allah and the prophethood of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. It is the foundation of Islamic belief, affirming that none is worthy of worship except Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his final messenger. In Arabic, Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. In Urdu, Allah के सिवा कोई माबूद नहीं, Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah के रसूल हैं. In English translation, there is no God but Allah. Muhammad is the messenger of Allah. Transliteration: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalima 2. Shahadat. This kalima reinforces belief in the oneness of Allah and the prophethood of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. It's a reaffirmation of one's faith and central to becoming or remaining a Muslim. In Arabic, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. In Urdu, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं. In English translation, I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Transliteration: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalima Tala Tamjid. This kalima expresses praise and glorification of Allah using powerful words found throughout the Quran and Sunnah. In Arabic, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. In Urdu, Allahu पाक है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह बुलंद बरतर के सिवा कोई ताकत और कुव्वत नहीं. In English translation, glory be to Allah and all praise be to Allah. There is no God but Allah, and Allah is the greatest. There is no power and no strength except with Allah, the Most High, the Most Great. Transliteration: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kalima 4. Tawheed. Unity of Allah. This kalima declare الونة لله وهوانه على عيات والدم فريحا أنه أبد والمكسي إن آرباء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. In Urdu, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं. वही जिंदगी देता है और मौत देता है, वह जिंदा है और कभी नहीं मरेगा, वह अज़मत और इज़्ज़त वाला है, उसके हाथ में हर तरह की भलाई है और वो हर चीज़ पर कादिर है. In English translation, there is no God but Allah. He is one and has no partner. His is the kingdom and all praise is for him. He gives life and causes death. He is alive and does not die, ever. Possessor of majesty and honor. In his hand is all good, and he has power over ever. Kalima 5. Astaghfar, seeking forgiveness. Kalima 5 is a deep prayer of repentance and seeking forgiveness from Allah for all sins, whether committed knowingly or unknowingly, in private or in public. It reflects humility and the desire for purification of the heart. In Arabic, Bismillahir Rahmanir Rahim, Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin أذنبته عمدا أو خطأ سرا
أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. इन उर्दू मैं अल्लाह से अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने जानबूझकर या गलती से छुपकर या जाहिर में किया हो, और मैं उन गुनाहों से तौबा करता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ और उनसे भी जिन्हें मैं नहीं जानता। बेशक तो गैबों का जानने वाला, ऐबों को छुपाने वाला और गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई ताकत और कुव्वत नहीं। कलीमा फाफ अस्तग़फ़ार, seeking forgiveness. In English translation, I seek forgiveness from Allah my Lord for every sin I have committed, knowingly or unknowingly, in secret or in public. I repent to him for the sins I know and the ones I do not know. Surely you are the knower of the unseen, the concealer of faults and the forgiver of sins. There is no power and no strength except with Allah, the Most High, the Most Great. Transliteration. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin adhnabtuhu amdan aw khata'an sirran aw alaniyatan. وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستر العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلمة 6. رد كفر, refutation of disbelief. This kalima is a powerful declaration of one's rejection of disbelief, shirk, associating partners with Allah, and all forms of sin. It reaffirms the commitment to pure Islamic belief and righteous conduct. In Arabic, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu bih, wa astaghfiruka lima la a'lamu bih. Tubtu anhu wa tabarra'tu min al-kufri wal-shirk والكذب والغيبة والبدع والنميمة والفواحش والفكيهة والمعاصي كلها. كلمة 6. رد كفر, refutation of disbelief. In Urdu, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं तुझ के साथ किसी को शरीक करूँ और मुझे उसका इल्म हो, और मैं तुझ से इस बात पर बख्शिश मांगता हूँ जिसका मुझे इल्म ना हो। मैं इससे तौबा करता हूँ और कुफ्र, शिर्क, झूठ, गीबत, बिदअत, चुगली, बेहयाई, बुहतान और तमाम गुनाहों से बेजारी इख्तियार करता हूँ। मैं इस्लाम कबूल करता हूँ और कहता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। In English translation, O Allah, I seek refuge in you from knowingly associating anything with you, and I seek your forgiveness for what I do not know. I repent from it and declare myself free from disbelief, polytheism, lies, backbiting, innovations, slander, indecency, false accusations, and all sins. I accept Islam and declare there is no God but Allah. Muhammad is the messenger of Allah. आइए आज हम ईमान की बुनियाद पाहे 6 कलमे सीखते हैं आसान अंदाज में।